Good morning all of you and welcome to GYANJYOTI online classes. And today's our video is about our new topic, that is topic number 12, adrift at sea. Okay, adrift at sea. Okay, so this is your new class of class 5th English main course book. Okay, and today we will begin the chapter. So let's begin our topic, and please open your book page number 120, adrift at sea. Okay, so here are the new words from the two pages of your book. Is monstrous, it means big; vanished means pass out; lifeboat, it is a seaboat designed to rescue people; panic stricken, frightened; bunk means a bed on ship; ripping, a sound of violent tearing. Okay, monsters का मतलब होता है बहुत बड़ा; vanish का मतलब पास आउट मतलब निकल जाना; लाइफ बोट, सी बोट डिजाइन टू रेस्क्यू पीपुल, एक तरह का क्या है बोट होता है, ठीक है ना, सी बोट जिसे कि क्या है पीपल्स को क्या रेस्क्यू किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि जो टायर्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, ट्यूब जो होते हैं ना, उनको क्या है सी बोट बोला जाता है, ठीक है ना। मतलब जो सी में जो ये होते हैं, ठीक है ना, सी में जितने भी मतलब जाते हैं मछली पकड़ने, ठीक है ना, तो अपने साथ में क्या है लाइफ बोट मतलब सी बोट को क्या है रखे रहते हैं, जिससे कि क्या है अगर कोई सिचुएशन ऐसा हो कि क्या है पानी में क्या है कई बार ऐसा होता है कि साइक्लोन आ जाता है, स्टॉर्म आ जाता है, तो उस समय क्या होता है कि उनका जो बोट्स होते हैं वो क्या है डूब जाते हैं, तो उससे क्या है वो बच सकते हैं। पैनिक स्ट्रिकन, इट मीन्स फ्राइटेंड, डर जाना; बंक, अ बेड ऑन शिप, बंक इज अ बेड, ठीक है ना, शिप में क्या है एक बेड होता है, उसको बंक बोला जाता है। रिपिंग, ए साउंड ऑफ वायलेंट टीयरिंग, रिपिंग मीन्स साउंड ऑफ वायलेंट टीयरिंग. So as how we tear something, as how it produce sounds like that, this is sound that produces a violent tearing. Okay, so let's go to our topic, adrift at sea. Okay, so I am reading out the story. So this is an extract from the international bestseller Life of Pi. The novel is about a young boy named Pisin Molitor Pai Patel, an Indian boy from Pondicherry. His father runs a zoo. The novel has two parts. The second part of the novel begins with the family moving to North America on a Japanese ship along with all the animals of the zoo. The ship, however, sinks and Pai is left alone on a lifeboat in the Pacific Oceans with a Bengal tiger named Richard Parker. Okay, so here you can see the characters Pai Patel and Richard Parker are present in the boat. Okay, are present in the boat. So it is an extract from the international bestseller Life of Pi. You might have seen the movie, okay, Life of Pi, which is taken from this novel. Okay, and the novel is about a young boy named Pai Patel, who is from Pondicherry, and his father runs a zoo. And the novel has two parts. Okay, the second part of the novel begins with the family. Okay, so their family once what happened, some due to some reasons, okay, due to some reasons, the family they moved to North America. And by the time of moving to North America on a Japanese ship, okay, they were going on a Japanese ship to North America, okay, because their zoo were not present there. What we say that the area where they were where they made the zoo were not there, so they had to leave that place, and by the way they had to move to North America and on a Japanese ship along with all the animals. Okay, along with all the animals, those the animals that were present in the zoo, they had to take all the animals along with them on the ship. Okay, and they were going to North America. So the ship, however, sinks and Pai is left alone on a boat in the Pacific Oceans with a Bengal tiger named Richard Parker. Okay, so at the mid of the Pacific Oceans, there a huge storm came and it devastated, destroyed their ships, and all the animals and the family members, those who were going on, those who were sitting in the ship, they get drowned
and all the animals, those who were there, they also got drowned in that oceans. Okay, so it is the summary of the what we can say, the story, a little bit summary. Okay, that how is the topic being described more about here. Okay, the main story is now onwards. Okay, the ship sank. It made a sound like monstrous metallic burp. Things bubbled at the surface and then vanished. Okay, the ship which was drowned in the ocean, it made a sound like a metallic burp, monstrous metallic burp. As how when we eat something and the burp comes out of our stomach, जैसे कि हम कुछ खाते हैं तो क्या बर्फिंग क्या है, हमारे अंदर से क्या है, स्टोमक से क्या है निकलता है, जिसको क्या ढकार बोलते हैं, ठीक है ना। खाने के बाद जैसा ढकार आता है वैसे ही क्या है, जब उनकी शिप डूब गया तो वैसे ही करके क्या है, एक बहुत बड़ा क्या है आवाज़ आया, ठीक है ना। तो वो शिप डूबा क्यों, जस्ट पहले बताया था कि कुछ स्ट्रॉन्ग्स क्या है, एक क्या है स्ट्रॉन्ग आ गया था, जिस वजह से क्या उनका जो शिप है वो क्या है डूब गया था, ठीक है ना। सो थिंग्स बबल्ड एट द सरफेस एंड देन वेनिस्ड. सो whatever the things that are present on the ship, they got bubbled. So as if when we put something in water, okay, when we put something in water, when the thing get drowned in water, the bubbles comes out from the water. It means that the oxygen present in the water, they comes up. Okay, so in the same way, when the ship got drowned in the sea, bubbles came out of the water. So everything was screaming on the sea, the wind, my heart. From the lifeboat, I was something in the water. Okay, so everything was screaming, whatever with the sea, the wind, my heart. It means the narrator's heart. Okay, so whatever they present, they were all screaming. Okay, सब क्या चिल्ला रहे थे, ठीक है ना। So from the lifeboat, I saw something in the water. Okay, and there was a lifeboat. Now each and every boat, there used to be a lifeboat. Okay, because by that the ship workers, okay, they can rescue people. Okay, so there is a lifeboat, and Richard Parker was there on the lifeboat, and he saw something in the water. He saw something that was drowning in the water. Okay, so I cried, Richard Parker, is that you? It's so hard to see that this rain would stop. Richard Parker, yes, it is you. So at first the narrator saw something drowning in the water. So he felt that as if someone is drowning. Okay, he doesn't know that the thing which he saw was an animal. Okay, it is not described yet now about the animals, that will be described later on. Okay, how he found that animal. Okay, so for time being now he doesn't know that the thing is what. Okay, he just think that some person is drowning in the water. Okay, so that is why he put that threw that lifeboat upon towards him to save his life. So at first he thought that it might be the Richard Parker, but due to heavy rain he was unable to identify that thing, whether is Richard Parker or not. But after some while, okay, he could find it that he is the Richard Parker. I could see his head. He was struggling to stay at the surface of the water. So here the narrator says that he was very he could see his head only. Okay, he could see his head, and the rest part of his body, okay, and the rest part of the body were drowned into the water, that was immersed into the water. Only the head was visible to him. Okay, and he was struggling to stay at the surface of the water, and the thing that was drowning in the water was struggling a lot to stay at the surface of the water. Jesus, Mary, Muhammad and Vishnu, how good to see you. Richard Parker, don't give up, please come to that lifeboat. Do you hear this whistle? Tree, you heard right. Swim, you are a strong swimmer. It's not 100 feet. So at the time, the narrator recalled all the gods and goddesses like Jesus, Muhammad, Mary, Vishnu. Okay, he recalled all of them. That God, please help him.
Okay, so Richard Parker, don't give up, please. So he instructed Richard Parker that please don't give up. Try and try, because you are a good swimmer, you can swim long way. Try and just listen to me, the whistle. Okay, he had a whistle which he was blowing. So he instructed Richard Parker that please listen to the whistle and follow the whistle and swim away to me. Okay, so it's not 120 degrees, it is not a far distance. You can swim, you are a good swimmer, you can swim with a boat. He had seen me, he looked panic stricken, he started swimming my way. The water about him was shifting wildly. He looked small and helpless. Okay, so he was severely threatened. Okay, so the thing that was drowning in the water was severely panic stricken. He looked panic stricken, he stared. Okay, started swimming my way. It means the thing that was drowning in the water was swimming towards the narrator's way by listening the sound of whistle. Okay, so he looked small and helpless. So from the lifeboat, the narrator could see that the animal or someone who was drowning in the water was very small and was helpless. So Richard Parker, can you believe what has happened to us? Tell me it's a bad dream. Tell me it's not real. Tell me I'm still in my bunk on the Simpson and I'm tossing and turning, and soon I will wake up from this nightmare. Tell me I'm still happy. So in this way, the narrator, he used to talk with the drowning thing. Okay, that will be one person that is not being described now yet. Okay, so he was talking with that thing that this is a kind of nightmare. Okay, this is a kind of frightened story. Okay, so you tell that this is not real, it is not true, it is just a nightmare. Okay, so tell me I'm still happy. So mother, my tender guardian angel of wisdom, where are you? And you, father, my loving worrywart, and you, Ravi, dazzling hero of my childhood. Vishnu, preserve me, Allah, protect me, Christ, save me. I can't bear it. Tree. Okay, so here the narrator, because all his family members, okay, her mother, her father, her friend Ravi, okay, so each and everyone, even the god and goddesses Vishnu, okay, he called each and everyone that where are you, please save us, we are in a trouble, please save us. But his father and mother, they have already drowned in the water. Only Richard Parker and the narrator was alive in that boat. I was not wounded in any part of my body, but I had never experienced such intense pain, such a ripping of nerves, such an ache of the heart. Here the narrator says that though I haven't any wound in my body, still it is a ripping of my nerves. Okay, still I can experience the ripping of my nerves, such an ache of the heart. ठीक है ना। तो यहाँ नरेटर कहता है कि मुझे क्या है, कोई चोट ना, मेरी बॉडी में ऐसा कोई चोट नहीं लगा है, फिर भी क्या है, मुझे इतना इंटेंस पेन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, अंदर से क्या है, दर्द क्या है महसूस हो रहा है। तो वो क्या है, अपने माता पिता, अपने जो फ्रेंड्स हैं, इवन द गॉड, सभी को क्या याद करता है, बुलाता है। ठीक है ना, भगवान हमें सेव करो, मम्मी पापा कहाँ हो, हमें सेव करो, हम क्या है, ट्रबल में हैं। तो सभी को क्या है, वो याद करता है। ठीक है ना, क्योंकि वो बीच में क्या है, फंस गए हैं। He would not make it, he would drown, he was hardly moving forward and his movements were weak, his nose and mouth kept dipping underwater, only his eyes were steady on me. Then here the narrator says that the thing that was drowning, okay, he would drown, he was hardly moving forward, okay, he was very helpless, okay, he was very helpless. That is why he found hard to move forward to his way। ठीक है ना, जो डूब रहा था, ठीक है ना, जो चीज़ डूब रहा था वो क्या है, बहुत ही हेल्पलेस हो गया था, तैर के क्या वो थक गया था। ही वॉज वेरी टायर्ड ऑफ स्विमिंग, ठीक है ना, और हेल्पलेस हो गया था, इसलिए क्या है, वो बहुत ही हार्डली क्या है, वो उसकी ओर आ पा रहा था। ओके, हिज नोज एंड माउथ केप्ट डिपिंग अंडर वाटर, उसकी जो
पहले क्या है उसकी जो गला, ठीक है ना, सिर्फ क्या है सील दिखाई दे रहा था, और धीरे धीरे क्या है उसके जो नाक है, माउथ सब क्या है धीरे धीरे पानी के अंदर क्या है डिप हो रहे थे, मतलब इमर्ज हो रहे थे, डूब रहे थे। ओनली हिज आइज वर स्टेडली ऑन मी, सिर्फ उसके क्या है आंख दिखाई दे रहे थे, ऐसे क्या है जो नरेटर को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है ना। सो व्हाट आर यू डूइंग रिचर्ड पार्कर, डोंट यू लव लाइफ, कीप स्विमिंग, देन ट्री kick with your legs, kick. Okay, so here the narrator says the Richard Parker that don't you love life, क्या तुम्हें जीना पसंद नहीं है, जब तक तुम स्विम नहीं करोगे क्या है तुम डूब जाओगे, इसलिए जितना जल्दी हो सके क्या है किक करो, ठीक है ना, और क्या है जल्दी ही क्या है तैर कर क्या है ऊपर चले जाओ। He stayed in the water and made to swim, फिर क्या है वो जो रहता है जो भी चीज, ठीक है ना, वो क्या है स्विम करना क्या है चाहता है, ठीक है ना। रिचर्ड पार्कर फिर क्या है स्विम करता है, ठीक है ना। तो अभी तक क्या है पता नहीं है कि रिचर्ड पार्कर एनिमल है पर्सन है, सिर्फ क्या वो रिचर्ड पार्कर का नाम सुना था, वही क्या उसको बुला रहा है, ठीक है ना। he was unknown about the animal, okay. And what of my extended family, birds, beasts and reptiles, okay, whatever the families, okay, whatever the families, extended families, it means the family apart from them, okay, apart from the family, those who are present with them, that were the birds, beasts, reptiles, all the things, all the animals that got drowned into the sea, सभी क्या है पानी में डूब जाते हैं। They who have drowned, every single thing valued in life has been destroyed, and allowed no explanations, and to suffer hell without any account from heaven. In that case, what is the purpose of reason, Richard Parker? Is it no more than to shine practicalities, the getting of food, clothing and shelter? Why can't reasons give great answers? Why can't we throw questions further that we can pull in an answer by such a vast net if there's so little fish to catch? So these are the all questions that were being asked by the narrator, okay, to the Richard Parker. Then whatever the things which was valued, okay, which is valued to his life has been destroyed. Okay, whatever the thing he loved has been destroyed due to the storm and due to the rain. Okay, so the question here the narrator asks is, why can we throw questions further that can pull in and answers? Okay, by such a vast net, if there's so little fish to catch, ठीक है ना। अगर कहीं पे कम मछली है तो बड़ा जाल फेंकने का क्या फ़ायदा, ठीक है ना। हम कुछ क्या है क्वेश्चन करते हैं उससे पहले हमको आंसर क्यों नहीं मिलता, ठीक है ना। क्वेश्चन से हमको क्यों जल्दी क्या है नहीं मिलते, ये सब क्या क्वेश्चन वो क्या है पूछता रहता है, ठीक है ना, किससे, रिचर्ड पार्कर से, ताकि क्या है जो रिचर्ड पार्कर है वो क्या है उसकी बातों को सुने और क्या है वो हेल्पलेस और ना हो, ठीक है ना। उसको ड्राउनिंग से बचाने के लिए, डूबने से बचाने के लिए क्या है रिचर्ड नरेटर जो है वो बहुत क्या है ऐसे तरकीबें सोचता रहता है कि कैसे उसको बचाया जा सके, इसलिए उसके साथ क्या है बात करते रहता है, ताकि क्या है उसका जो माइंड है क्या है वो इधर उधर डाइवर्ट ना होकर क्या है उस स्विमिंग में क्या है ध्यान दे और जल्दी क्या वो बोर्ड पर आ जाए। ओके, so here barely is small margin wave, a type of signal by a movement of head. Waving means okay, iron in stage mightily to a great extent, a boat on board jam pulled on with a lot of force. Okay, so let's go to our story. His head was barely above water. He was looking up, taking in the sky. One last time, there was a lifebuoy in the boat with a rope tied to it. Okay, I took hold of it and waved it in the air. Okay. Okay, so only his head was seen above the water. Okay, by a small margin. Okay, by a small portion of his head was seen by the narrator in the water. Okay, he was looking up, taking in the sky. One last time, there was a lifebuoy in the boat with a rope tied to it.
and took hold of it and waved it in the air. Thereafter, the narrator thought that what he will do to help Richard Parker. So he saw a lifebuoy present in the lifeboat. Okay, so lifeboat is one type of tire. Okay, tire or tube is a type of tube through which the peoples are being rescued. Okay, lifebuoy. Okay, so he saw a lifebuoy in the boat and he waved at Richard Parker that it is a lifebuoy. Okay, and we have to catch it. Okay, you have to catch it and come along with it. Okay, so here the narrator had that lifebuoy and it was tied with a rope. Okay, and he waved at Richard Parker. So do you see this lifebuoy, Richard Parker? Do you see it? Catch hold of it. I will try again. Okay, so he waved at Richard Parker, throwing the lifebuoy, and he threw for first time. He threw the lifebuoy to Richard Parker. Okay, to Richard Parker, but it didn't reach to Richard Parker. For the very next time, okay, he threw it towards him. So he was too far, but the sight of the lifebuoy flying his way gave him hope. He revived and started beating the water with vigorous, desperate stroke. Okay, so he was too far from that lifebuoy. Even the sight of that lifebuoy gave a new hope. Okay, gave him a hope that he can catch that lifebuoy and he will be alive. So in order to catch that lifebuoy, he beat the water with vigorous. Okay, vigorously he beat the water. Okay, and with desperate strokes. Okay, so that's right. 1 2 1 2 1 2. Breathe when you can. Watch for the waves. 3 3 3. So here some instructions were given by the narrator to Richard Parker. Okay, that so when you want to breathe, you can breathe and swim. Okay, watch for the waves. Okay, watch for the waves. Okay, if the waves comes out, then you can dip inside. Then after the waves have been to some other place. Okay, जब क्या है ये वेव्स आते हैं, ठीक है ना, तो तुम क्या करना, नीचे क्या है सिंक कर जाना, फिर से क्या है ऊपर की ओर क्या है चले जाना. ठीक है ना, वेव्स का मतलब जो लहर होते हैं ना, समुद्र की क्या है लहर होते हैं. ठीक है ना, तो जो नैरेटर होते हैं वो बहुत क्या है कोशिश करते हैं कि वो जो लैंडबॉय है, ठीक है ना, उसको क्या है रिचर्ड पार्कर तक कैसे पहुंचाया जाए. लेकिन क्या है जो लैंडबॉय होता है वो उसके पास क्या है जा नहीं पाता. ठीक है ना, क्योंकि वो जो लहर में क्या है, ठीक है ना, वेव्स में समुद्र के जो ओशन के जो वेव्स होते हैं उनमें क्या है वो जा नहीं पाता उसकी और. ठीक है ना, तो बहुत कोशिश करता है कि जो नैरेटर होते हैं कि रिचर्ड पार्कर उसको क्या है पकड़ ले और उसको पकड़ कर क्या है यहाँ पे चली जाए. ठीक है ना, तो बहुत सारे क्या कुछ ना कुछ क्या उसको इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि तुम्हें यह करना चाहिए, क्या लिसनिंग विशल का जो साउंड है उसको क्या लिसन करते रहो और जिस तरह से साउंड आए उसी तरह क्या है तुम स्विम करते रहो. ठीक है ना, तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है. सो माई हार्ट वॉज चिल्ड टू आइस, आई फेल्ट इट इल विथ ग्रीफ, बट देयर वॉज नो टाइम फॉर frozen shock. It was shock in activity. Something in me did not want to give up on life, was unwilling to let go, wanted to fight to the very end. Where that part of me got the heart, I don't know. Okay, so when he saw that kind of situations, he was completely chilled. Okay, his heart was chilled to ice. Okay, he felt with grief. He felt very intense pain, but there is no time for frozen shock. It was shocking activity. Okay, so he saw the situation, he was very shocked, but there was something who didn't want to give. Okay, to which he didn't want to give upon life. Okay, क्या है कुछ भी चाहे वो सोचता है कि मतलब वो जो सिचुएशन है, कंडीशन को देख कर क्या है उसकी जो धड़कनें हैं वो क्या थम सी जाती हैं. ठीक है ना, बहुत ही क्या है शॉकिंग फील करता है क्योंकि सभी के सभी क्या डूब जाए रहते हैं, सिर्फ वो और क्या वो रिचर्ड पार्कर क्या है बचे रहते हैं.
ठीक है ना, लेकिन क्या उसको बचाने की कोशिश करता है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, आखिर दम तक क्या है, आखिरी सांस तक क्या है, मैं उसको बचा के रहूँगा। ये क्या है उसका जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन क्या है वो करता है कि लास्ट तक क्या है, पूरा एंड तक क्या है, मैं उसको क्या है बचा के रहूँगा। सो वेयर द पार्ट ऑफ मी गॉट द हार्ट आई डोंट नो। Isn't it ironic, Richard Parker? We are in the hell, yet still we are afraid of immortality. Look how close you are. Free. Hooray, hooray. You have made it, Richard Parker. You have made it. Catch hum. तो वो क्या है, रिचर्ड पार्कर से क्या है क्वेश्चन पूछता है कि क्या है, तुमको नहीं लगता कि क्या है स्ट्रेंज चीज़ है कि हम क्या है यहाँ पे फंस गए हैं, ठीक है ना, जैसे तैसे होकर क्या है हम यहाँ बचना चाहते हैं, ठीक है ना, और इससे बड़ा जो लाइफ है अमर जो है कि हमको क्या है नहीं मिलेगा, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम हमको लाइफ क्या ऐसे नहीं मिलने वाला। इंसान सोचते हैं कि वो क्या है अमर जो क्या है अमृत पीकर क्या अमर होना चाहते हैं, लेकिन ये जो हमको जो जिंदगी मिली है अभी, ठीक है ना, ये क्या है वो अमर से क्या है ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना। सो रिचर्ड पार्कर, you have made it, catch on. Okay, so by signaling to Richard Parker that you have made it, you have followed all the instructions, you have made it, you can catch, okay, catch the life boy. Threw the life boy mightily, okay, it fell in the water right in front of him. With his last energies, he stretched forward and took hold of it. Okay, with full of energies, okay, with full of energy, Richard Parker tried and tried to catch, to hold that life boy, and he was finally successful. Okay, so when the narrator, each and every time when the narrator threw that life boy towards him, towards him, it was not gone to some extent to him. Okay, so therefore he was unable to hold that life boy. Okay, so it fell in the water right in front of him. Okay, the last time he threw that life boy towards him and in front of him, and the life boy was thrown in front of him, and Richard Parker was able to hold that life boy. So I go hold on tight, I will pull you in, don't let go. Pull with your eyes while I pull with my hands. In a few seconds you will be aboard and we will be together. Wait a second, together, we will be together. I have gone mad. Okay, फिर क्या है कुछ समय के लिए क्या है जो रिचर्ड पार्कर जो रहता है वो कहता है कि क्या है इसको अच्छी तरह से क्या है पकड़ो, ठीक है ना, जो लाइफ बॉय फेंकता है उसको कहता है कि अच्छी तरीके से पकड़ो और इसको पकड़ के क्या है चले आओ, ठीक है ना। फिर कुछ समय के लिए वो बोलता है कि इन अ फ्यू सेकंड्स, ठीक है ना, कुछ समय, ठीक है ना, कुछ सेकंड्स के बाद क्या है तुम मेरे साथ क्या है ये बोट में आओगे। फिर वो सोचता है कि हम दोनों एक साथ कैसे ये बोट में रह सकते हैं। तब उसको पता चल गया था कि क्या है वो एक क्या है एनिमल है, लिटिल क्या है वो एक बंगाल टाइगर है। तो वो अपने आप को क्या है कहता है कि क्या मैं पागल हूँ जो तुम्हारे साथ क्या है रहूँगा, ठीक है ना। जो टाइगर्स होते हैं वो क्या है फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, तो उसको डर था कि कहीं ना कहीं क्या अगर वो बोट में आए तो उसे क्या है मार देगा, ठीक है ना। तो कुछ समय के लिए वो सोचता है कि क्या मैं पागल हूँ जो क्या है तुम्हारे साथ रहने जाऊँगा। आई वोक अप टू व्हाट आई वाज डूइंग, आई yanked ऑन द रोप, ठीक है ना। फिर वो क्या है सोचता है झट से क्या है वो सोचता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं एक एनिमल्स को कैसे एक टाइगर, ठीक है ना, जो कि क्या है आदमखोर है, उसको क्या है मैं अपने बोट में अपने साथ कैसे रख सकता हूँ। तो एक समय के लिए वो सोचता है कि मैं क्या है ये जो क्या है वो जो लाइफ बॉय रहता है उसमें क्या रस्से बंधे रहता है, एक एंड को वो पकड़ लेता है और उसको क्या फेंकता है। तो कुछ समय के लिए सोचता है कि चलो इसको क्या छोड़ देता हूँ, टाइगर को क्या है और वो नीचे क्या ढकेलने की कोशिश करता है। So let go of that life boy, Richard Parker. Let go, I said. I don't want you here. Do you understand? Go somewhere else. Leave me alone. Get lost. Drown. तो क्या है उसको क्या है और ऊपर क्या है आने नहीं देता। वो कहता है कि तुम क्या है डूब जाओ, तुम मेरे साथ क्या है नहीं रह सकते, मैं तुम्हें अपने साथ क्या कभी नहीं रह सकता, नहीं रख सकता, ठीक है ना। उसको वही छोड़ने की क्या है वो मन बना लेता है। He was kicking vigorously with his legs. I grabbed an oar and thrust at him, meaning to push him away. I missed and lost hold of the oar. I grabbed another oar and dropped it
in an oarlock and pulled as hard as I could, meaning to move the lifeboat away. All I accomplished was to turn the lifeboat a little, bringing one end closer to Richard Parker. फिर क्या है वो करता क्या है, वो अपना जो ओर है, ठीक ना, ओर मतलब क्या है, it is some one kind of an equipment that is used to steer boat. Okay, was present in the boat, ठीक ना. एक ओर क्या है, उसमें क्या है रहता है, वो ओर से क्या है उसकी ओर क्या मतलब पुश करता है, ठीक है ना. वो रिचर्ड पार्कर की ओर क्या पुश करता है कि तुम डूब जाओ कहकर, ठीक है, क्योंकि वो उसके साथ क्या रखना नहीं चाहता. I missed and lost hold of the oar. I grabbed another oar and dropped it in an oarlock and pulled as hard as I could, meaning to move the lifeboat away. All I accomplished was to turn the lifeboat a little, bringing one end closer to Richard Parker. ठीक है ना. फिर कुछ समय के लिए वो सोचते हैं कि ये भी क्या है कर रहा हूँ, ये क्या करना सही नहीं होगा, ठीक है ना. कोई डूब रहा है तो उसको बचाना चाहिए. फिर क्या है वो अपने बोट में क्या है उसको लाने की क्या है कोशिश करता है. तो पहले क्या वो सोचता है कि जानवर है, ठीक है ना, वो आदमखोर है, वो मुझे मार देगा, इस वजह से क्या उसको बचाना नहीं चाहता. फिर बाद में क्या वो बचाने की कोशिश करता है. ओके ओके, सो आई वुड हिट हिम ऑन द हेड, आई लिफ्टेड द ओर इन द एयर. ओके, सो द नेटर वाज नॉट एट ऑल वांटेड टू be board, okay, be aboard on the Bengal tiger on his lifeboat. Okay, that is the reason that he lifted the oar in the air, ठीक है ना. तो वो क्या करता है, जो ओर रहता है, ठीक है ना, जो जिससे नाव चलाते हैं, तो स्मॉल पीस ऑफ पाइप क्या है रहता है, तो उसको क्या है ऊपर की ओर क्या उठाता है कि मैं इसको बचाने नहीं वाला हूँ, ठीक है ना, इसको क्या है डूब जाने दो, नहीं तो ये मुझे मार देगा, ठीक है ना. तो वो उसको क्या है मतलब नीचे, ठीक ना, ड्राउन करने की क्या बहुत ही कोशिश करता है, ठीक है, लेकिन क्या है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता. और क्या है जो टाइगर रहता है वो क्या है बोट पर क्या है फिर से क्या है चले आता है. ओके, ही वाज टू फास्ट, ही रीच्ड अप एंड पुल्ड हिमसेल्फ अबोर्ड. ओके, सो द टाइगर वाज टू फास्ट एंड ही रीच्ड अप टू द बोट. ओ माय गॉड, रवि वाज राइट. ट्रूली आई वाज टू बी द नेक्स्ट गोट. I had a wet, trembling, half-drowned, having and coughing 3 years old adult Bengal tiger in my lifeboat. ठीक है ना. तो अपने फ्रेंड रवि को याद करता है कि हाँ रवि ने क्या है सही कहा था, जो टाइगर्स होते हैं बहुत ही क्या है हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है ना. तो वो टाइगर को देख के क्या है बहुत ही चौंक जाता है, ठीक है ना, डर जाता है कि उसके पास क्या है एक 3 साल का क्या है ओल्ड, ठीक है ना, 3 साल का बहुत ही क्या है ओल्ड एडल्ट बेंगल टाइगर क्या है उसकी लाइफबोट में आ गया है. So Richard Parker rose unsteadily to his feet on the tarpaulin, eyes blazing as they met mine, ears laid tight to his head, all weapons drawn. His head was the size and color of the lifebuoy. With teeth, I turned around, stepped over the zebra, and threw myself overboard. Okay, so here the Bengal tiger rose towards the Richard Parker, and Richard Parker has no options. Okay, so he said, he turned around and stepped over the zebra. Okay, so there was some other creatures present in that lifeboat. Okay, there was some animals like zebra. Okay, zebra was also present in that lifeboat. तो रिचर्ड पार्कर क्या करता है, वो अपने आप को क्या है बचाने के चक्कर में क्या है अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, और क्या है जेब्रा के क्या है पीछे क्या है बैठ जाता है, और क्या है वहाँ से कूदने की क्या है कोशिश करता है, ठीक है ना. तो उससे पहले क्या है वो क्या करता है, जो लाइफबोट रहता है ना, वो लाइफबोट को क्या है पीछे रस्सी में क्या है बांध कर क्या है उस पर क्या वो कूद पड़ता है, ताकि क्या है जो टाइगर है वो क्या है लाइफबोट में क्या है और लाइफबॉय में क्या है आ ना पाए, क्योंकि जो टाइगर है ऑब्वियसली वो बोट में पहले आगे आ चुका था, ठीक है ना, लाइफ बोट में क्या है वो आ चुका था. अब क्या है जो रेप्टाइल है वो डर के मारे क्या है वो ओशन, ठीक है ना, समुद्र में फिर से क्या है कूद जाते हैं. कहाँ कूदते हैं, जहाँ पे कि वो वहाँ पे लाइफ बॉय क्या है रहता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या वो कूद जाता है, कि अपने आप को क्या है वो बचाने की कोशिश करता है. फिर बाद में क्या है वो क्या है जो टाइगर रहता है वो उसको ना अपने हिसाब से क्या है ट्रेनिंग करने की क्या है
कोशिश करता है। अब देखो जो एनिमल है वो क्या है, इतना देर से क्या है पानी में तैर रहा था, हेल्पलेस हो गया था, टायर्ड हो गया था, भूख भी लग रहा था। अब भूख में क्या है जानवर कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। तो क्या है बाद में कुछ दिन क्या है वो वही बोट में क्या है बिताते हैं। उसके बाद क्या है जो पाई रहता है मतलब नरेटर, ठीक है ना, वो उसको क्या है ट्रेन करने की कोशिश करता है ताकि क्या वो उसके बाद मान सके। ओके, सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट a drift at sea. Okay, so we have finished on topic number 12. फिर से शॉर्टली क्या है तुमको स्टोरी एक बार क्या समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक स्टोरी है पाई पटेल के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद उसके जो पापा थे वो एक जू चलाते थे। अब जू क्या है कुछ कारण के लिए क्या है वहाँ बंद कर दिया गया था, ठीक है ना। तो इस वजह से उसके पेरेंट्स क्या है नॉर्थ अमेरिका एक जापानी शिप में जा रहे थे और वो जो शिप था वो क्या है डूब गया, ठीक है ना, बीच में क्या है डूब गया। और उसमें सिर्फ बचे कौन, रिचर्ड पार्कर, ठीक है ना, जो बंगाल टाइगर है। लेकिन हालांकि अभी तक क्या है वो नरेटर को क्या है पता नहीं रहता कि वो जो बंगाल जो रिचर्ड पार्कर है वो क्या है एक एनिमल है, ठीक है ना। तो अब क्या है वो लाइफ बोट में वो अकेले क्या है रहता है, ठीक है ना। शायद क्या किसी ने जो क्रू मेंबर्स थे, शिप के जो क्रू मेंबर्स थे, शायद किसी ने नरेटर को क्या वो लाइफ बोट में क्या कूदने के लिए कहा होगा ताकि क्या तुम अपनी ज़िंदगी बचा सको, लाइफ बचा सको, करके उसको वहाँ पे मतलब ये कि पुश कर दी होगी, ठीक है ना। तो जो नरेटर है वो लाइफ बोट में क्या है रह जाता है, ठीक है ना। फिर कुछ समय बाद क्या है वो देखता है कि कोई क्या है डूब रहा होता है कहाँ पे, ओशंस में। तो उसको क्या वो बचाने की हेल्प करता है। और इस दौरान क्या वो सभी अपने जो देवी देवता हैं, ठीक है ना, जितने भी गॉड्स हैं अल्लाह है, ठीक है ना, मोहम्मद, मैरी, जेसस, विष्णु, ये सभी को क्या वो कॉल करता है, याद करते हैं कि भगवान हमें क्या है हेल्प करो, हम शक्ति दो, हम क्या है यहाँ से बचाने की क्या है कोई रास्ता दिखाओ, ठीक है ना। अब क्या है वो उसको क्या है बचाने की कोशिश करता है रिचर्ड पार्कर को, और क्या है बचाने के लिए बहुत सारा क्या है इंस्ट्रक्शन भी क्या है रिचर्ड पार्कर को देता है कि तुम ये करो तो तुम क्या है बोट के पास आ सकते हो, ठीक है ना। अब उसको उसकी ओर क्या है वो लाइफ बॉय को फेंकता है, ठीक है ना, एक तरह का क्या रेस्क्यू इक्विपमेंट है, ठीक है ना, रेस्क्यू जिससे किया जाता है। तो उसको उसकी ओर क्या है फेंकता है, ठीक है ना। अब फेंकने पर क्या है वो जो रिचर्ड पार्कर रहता है बहुत समय तक क्या है वो पानी में क्या है स्विम करता रहता है, तो थक जाता है, ठीक है ना। तो बार बार कोशिश करने के बाद क्या है उसको क्या है वो सफल हो जाता है और वो लाइफ बॉय में क्या है आने की कोशिश करता है। लेकिन क्या है जो रिचर्ड पार्कर होता है जब वो पास में देखता है कि वो एक एनिमल है, एक बंगाल टाइगर है, वो डर जाता है। फिर सोचता है कि मैं इसको और बचाने वाला नहीं हूँ, अगर मैं बचाऊंगा तो खुद मारा जाऊंगा, ठीक है ना। इस वजह से क्या है बोट में एक और रहता है, ठीक है ना, उसको लेकर क्या है उसको और पुश करने की कोशिश करता है पानी में, और क्या है डूबोने की क्या कोशिश करता है कि तुम मत आओ, ये बोट में मत आओ। फिर भी क्या होता है कि वो चले ही आता है, ठीक है ना। जैसे ही मतलब वो रिचर्ड पार्कर एनिमल, ठीक है ना, जो बंगाल टाइगर होता है वो क्या है जैसे पास में आता है वो अभी एक छलांग मार कर क्या है बोट की ओर क्या है चले आता है, ठीक है ना। फिर क्या है वो टारपोलिन में क्या है अपने आप को क्या है सुखाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है पूरा वो नैरेटर की ओर क्या है देखता है। अब देखो उसको तो भूख लग रहा होता है, ठीक है। अब आदमखोर जानवर कुछ भी क्या है खा सकता है। तो जो नरेटर है वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं वो जेब्रा की पीठ पर बैठ कर के है वहाँ से कूदने की क्या है कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब क्या है अगर कूदेंगे तो पानी में क्या है बह जाएंगे, मरेंगे ही। तो इससे बेटर ये है कि क्या है करते हैं वो जो लाइफ बोट रहता है उसको क्या है पानी में फेंक देते हैं, ठीक है। उसमें रस्सी पहले से बंधा हुआ होता है और उसी लाइफ बोट में क्या है वो कूदते हैं और अपना क्या है जान बचाते हैं टाइगर से। अब कुछ दिन क्या है ऐसे ही चलता है और फिर बाद में क्या उसको ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जो नटर होते हैं रिचर्ड पार्कर यानी जो एनिमल है उसको क्या है ट्रेन करने की कोशिश करते हैं कि क्या कि वो जो एनिमल है वो उसकी बात मान सके, ठीक है ना। और ये प्रोसेस में क्या वो चलता रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक। ओके, तो ये क्या है सेकंड पार्ट है, ये सब कुछ ये जो है एक पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी है जो कि तुम्हारे क्या है बुक में नहीं दिया गया है, शायद ये दूसरे चैप्टर्स में हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेस क्लास। होप यू हैव एंजॉयड आवर क्लासेस। थैंक यू। स्टे होम एंड स्टे सेफ।